For all the latest updates, subscribe to News9. Prime Minister Narendra Modi launched a new platform, Transparent Taxation, honoring the honest. Finance Minister Nirmala Sitharaman was part of the launch event. Nirmala Sitharaman said PM Modi's vision is to empower honest taxpayers in the country. The vision of the Prime Minister is to empower the taxpayers, to provide a transparent system and to honor the honest taxpayer. Central Board for Direct Taxation has given a framework and put in place a system in the form of this platform, a transparent, efficient and accountable tax administration. During his address, Prime Minister Modi said the platform has a big reform such as faceless assessment, faceless appeal and taxpayers charter. इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं। फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। The Prime Minister lauded honest taxpayers and said their contribution helps in the development of the country. Honoring the honest, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है। PM Modi asserted that the aim was to make tax payments seamless, painless and faceless. 5 लाख रुपए की आय पर अब टैक्स 0 है। बाकी स्लैब में भी टैक्स कम हुआ है। कॉरपोरेट टैक्स के मामले में हम दुनिया में सबसे कम टैक्स लेने वाले देशों में से एक हैं। साथियों, कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो, फेसलेस हो। PM Modi also laid out a 4-step strategy to ease the burden on honest taxpayers. Modi's 4-step strategy was policy-driven governance, the usage of technology and rewarding the efficiency of bureaucracy. The focus of the tax reforms has been on reduction in tax rates and on simplification of direct tax laws. The new tax reform includes bringing more transparency in official communication through the newly introduced document identification number, wherein every communication of the department would carry a computer-generated unique document identification number. The IT department has moved forward with pre-filling of income tax returns to make compliance more convenient for individual taxpayers.